राशिद मसूद जी को 4 साल और राय जी को 4 साल एंड गुरदयाल जी को 7 साल, बाकी स्टूडेंट्स 1 ईयर। सो विद फाइन विद द डिटेल्स मेरे पास अभी नहीं है। एक बार फिर से बता दीजिए क्या हुआ। अभी वही उन्होंने 2:30 बजे बुलाया था, पहले आर्ग्यूमेंट हुए थे वो थोड़े से जो करा था, फिर उन्होंने 2:30 बजे बुलाया था। इन्होंने ये राशिद जी है और राशिद जी को 4 साल, मिस्टर राय को 4 साल और गुरदयाल सिंह को 4 साल, बाकी जो स्टूडेंट्स बेनिफिशियरीज थे उनको 1 साल और फाइन आई नॉट नो। ऑब्जर्वेशन में भी बोला कुछ? अभी कुछ भी नहीं, ये जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ टेंशन एंड हाई। एक्सप्रेशन कैसा था जब फैसला आया रशीद मसूद जी का, तो एक्सप्रेशन कैसा था? काम स्टिल इनसाइड, एवरीथिंग इज इनसाइड। हिरासत में तो ले लिया गया होगा मैम? 4 साल की हुई है तो आई डोंट नो। अभी राशिद मसूद नर्वस थे जब ये फैसला सुनाया गया? नहीं ऐसा कुछ नहीं। अब ये है कि जी हाँ, यही कहा गया था कि एजेड है और लॉन्ग ट्रायल है, जिस पे हम बेसिस कर रहे थे कि द ट्रायल हैज गॉन वेरी वेरी लॉन्ग, 17 years। इट हैज बीन 17 years सिंस द ट्रायल हैज गॉन। हाँ जी, पुअर ऑयल्स ऑन द करियर, पर नहीं 4 साल हुआ उनका। तो बैठ जा हो गया। थैंक यू। The big story we are breaking for you right now, that is of course that Congress Rajya Sabha MP Rashid Masood has been sentenced to 4 years by the Tisasari court in the capital. Let's go over to Siddharth Pandey for more details. Siddharth, tell us more. Well, in fact, as you heard it there from one of the defense lawyers, she came out and briefed the media. In fact, just at the last moment, the media also not being allowed inside the court. Obviously, a big media presence. But the big news right now is that Rashid Masood, sitting member of parliament of the Rajya Sabha from the Congress, now been sentenced to 4 years of punishment in jail. And that's, of course, on several charges. He, along with 2 others, have been given 4 years in jail, also a fine of 40,000 rupees. And that obviously means that he anyway now faces disqualification. Today was the quantum of punishment. The court going ahead, giving him 4 years along with a 40,000 rupees fine. As far as the defense side was concerned, they kept pleading before the court that all these several of these gentlemen were on in age. They were senior citizens. They were in poor health, and therefore leniency should be given by the court. The court, of course, could have given them up to 7 years in jail, but finally deciding to give them 4 years. They will have to go and undergo this term. The 3 main accused in this particular case already taken in custody inside court, and like I said, that along with the jail term of 4 years, they'll have to pay a penalty of 40,000 each.